Hello viewers, a very warm welcome back to the class. This time with starting with again another subject, new subject, control systems in the series of Gate 24 AC solutions. Let's start with the very first question, question number 12 of 1 mark MCQ type that came from subject control systems in the master optional question for Gate 24 AC. Question number 12 in the master question for Gate 24 AC for subject control systems is as follows. Is given in the context of Bode magnitude curves (40 dB per decade) is the same as options are given as option A 12 dB per octave, option B 6 dB per octave, option C 20 dB per octave, and option D 10 dB per octave. Let's move on to the solution for this question. It's a pretty simple question actually. 40 dB per decade, that is when omega is increased by 10 times, gain increases by 10 to the power 40 by 20, that is 100 times. Okay. Now to convert from dB to per decade to dB per octave, right? We need to multiply 40 by log of 2 base 10. So it will be 40 times 0.3, so 12 dB per octave. dB per decade means if omega is increased by 10, what will be the increase in gain in dB? Now if omega is increased by 2, then the corresponding increase in gain will be expressed in dB per octave, right? Right. Yeah. So right answer to this question is option A. And I explained in detail how we are getting it. That's all the solution to this question. If you have any doubts or queries, please feel free to ask in the comments. Thank you. Moving on to the next question, this is a Gate 24 AC solution for subject control systems. Next question is also 1 mark MCQ type. Question number 13, the official master question of Gate 24 AC for subject control systems is as follows. Question number 13, 1 mark MCQ. It is given in the feedback control system. Shown in the figure below. G of S proceeds by S into S plus 1 into S plus 2. This is shown like this. Unity feedback. Something like this. R of S and this is Y of S. Right? As you know, R of S, Y of S
G of S, and nothing but E of S. Laplace transforms. Nothing to write this implied actually. As it is mentioned in the question. Okay, it's given like this. If the input RT is a unit step function, then a limit of t tends to infinity, e of t equal to 0, b limit of t tends to infinity, e of t equal to 1 by 3, c limit of t tends to infinity, e of t equal to 1 by 4, and option D, limit t tends to infinity, e of t does not exist. E of t is oscillatory. We know the solution of this question. It is simple actually, but we need to be careful. For this, we can directly apply the steady state error function formula. What is that? E of S limit S tends to 0. SGS, as it is a unity feedback system. So if we directly apply this, then we will get what? 1 by, so reciprocal of this, 1 by limit S tends to 0, 6 by S into S plus 1, S plus 2 into S, SS cancels, so you get what? 1 by 6 by 1 into 2, that is 3. So after solving this, pretty simply you will get the steady state error simply in one step. We will get it as 1 by 3, which is exactly matches the option B. But there is a catch in this. When is this formula applicable? When the system is stable, not oscillatory, non-oscillatory. That is, all the roots lie in the left half of the spin. But here, all the roots of GS lie in the left half of the spin. But for the closed loop transformation, we have to find out. If we check, we will find that the closed loop transformation will not have all the roots in the left half of the spin. That's 2 by writing the characteristic equation. If we write the Rouse array, we get what? 1, 2, 3, 6. So internal product is equal to external product. So we can clearly say that the next elements will be 0 and the roots are lying on the imaginary axis. The system is oscillatory, so we directly can't apply the formula for steady state error. So the correct answer to this question is option D, that is t tends to infinity, E of t does not exist, and E of t is oscillatory. And the first approach what we used to find steady state error 1 by 3 is incorrect. So that's all. Thank you. Continuing and moving on to the next question, the series of K-24 easy solution subject control systems. Next question is again of 2 marks, MCQ type, from basically decay of time and domain response for a unity feedback, negative feedback control system. Question number 37 in the master question we will get to easy. The subject control systems is as follows. So, 2 marks, MCQ type.
Consider unity negative feedback. Control system with forward path gain K equal to GS equal to K by S plus 1, S plus 2, S plus 3 as shown. Basically the block diagram is given like this. Is given like this. So it is negative feedback. Is asked the impulse response of the closed loop system decays faster than e to the power minus t if different values of gains of k are given, which are 1 to 5, option A, option B 7 to 21, option C -4 to -1, and option D -24 to -6. Moving on to the solution to this question. Very simple question actually. We will solve this question by simple mapping of this time minus 1 to the minus t. E to the power minus t means maps to a closed loop pole at s equal to -1. Right. So a system decays faster than e to the minus t if the closed loop poles are to the left hand side of is equal to -1. This is the expensive G omega and sigma. This is s equal to -1 or sigma equal to -1. If the poles are to the left of this line, then we can say that the system decays faster. E to the -2t, e to the -3t, all are faster, decaying e to the -t. So basically, the closed loop pole should lie to the left of this s equal to -1 line. So what we will do is substitute s equal to -1 by another variable, say z. So g of z becomes what? K by z into z plus 1, z plus 2. Now, to transform this by the substitution, this is the z plane basically, sigma prime, say g omega prime. S plane gets converted to z plane, this line z equal to 0. Now we have to find the poles to the left of the plane, z equal to 0. As s equal to -1 maps to z equal to 0. So we need to find the poles to the left of z equal to 0. So for this we know the very conventional method, which is finding the stability by Raoult-Hurwitz's criterion by making the Raoult area known. So let's do that. So the Raoult area will be z because we converted the variable s to z. So the maximum will be z cube, z square, z to the power 1, z to the power 0 like this. So it will be 1. What will be the geometric feedback? What will be the closed loop transformation? I mean the characteristic equation, z cube plus 3z square plus 2z plus k equal to 0. So the Raoult area will be what? 1, 2, 3k. System will stable if 6 minus k by 3. Right. If this is greater than 0, 6 minus k greater than 0,
or k is less than 6. For which option you have to check the options for which option is this being satisfied, k is greater than 6. Of course, it's assuming if one k is between 1 and 5 and is greater than 6, option is correct. Option B is not correct. K is greater than 7, less than 21. Option C similarly, it's not correct, and option D also not correct because k doesn't satisfy this inequality for the remaining options. So the correct answer to this question is option A. And as explained on a different unconventional approach, hope it is clear. We first converting this s to z variable by shifting the omega axis, okay, such that it falls in the conventional method of finding poles in the left half. Condition of on k for is the poles that will left half, which is basically the round theory. Next, we follow the conventional steps to find the value of the range of values of k for which system is stable. For which all the poles lie to left of z equal to 0. This is same as s equal to -1. Or the values of k for which the impulse response of the closed system decays faster than -t. So the correct answer for this question, as I explained with proper steps and explanation, is option A. The solution is clear. If you still have doubts or queries, please feel free to ask in the comments. And that's all for the solution to this typical tricky question. Moving on to the next question in the series of gate utility easy solution to such control systems. Next question is also of 2 marks from basically root locus. Not directly asked, but in a different way. Question number 38 in the official master question paper of gate utility for EC conceptual control systems is as follows. 2 marks MCQ day. Question number 38 is given a satellite altitude control system as shown below. Has a plant with a transfer function is given as g of a is equal to 1 by a square cascaded with a compensator c of a is equal to k s plus alpha upon s plus 4 k and alpha positive real constants. The order is given something like this. Unity negative. C of s cascade with G of s like this. Y of s is asked in order for the closed loop system to have poles at -1 plus minus j root 3, the value of alpha must be, options are given as 0, 1, 2 and 3. Very simple. Let's move on to solution to this question. Very simple question. So let's talk to root locus. System transfer function is open loop or forward path transfer function is given and compensate transfer function is given. G of s and C of s respectively. You can see
Closed loop transfer function to a poles at a certain point. It means what? The root locus should pass to that point, or it should be a point on the root locus. So minus 1 plus minus j root 3 should be a point on root locus of CS times GS. Right? Now, so it should satisfy the root locus criterion, I mean the magnitude and angle criterion. Here, the magnitude criterion is difficult to find because two unknowns are there, k and alpha. But the angle criterion is a bit easier to find because it will let us find the value of alpha directly without bothering out k. So let's apply the angle criterion. Angle of CS into GS at s equal to minus 1 plus minus j root should be equal to minus 180 degree. Angle criterion. Very simply. Now, if we put, let's put minus 1 plus j root 3. Minus 1 plus alpha plus j root 3. Angle of this. Angles get added when in cascade. So, minus angle of minus 1 plus j root 3 whole square and minus of minus 1 plus j root 3 plus 4 8 is equal to minus 180 degree. The angle of this is unknown, so we will keep it like this only. Minus 1 plus alpha plus j root 3. Angle of this is what? Minus 1 plus j root 3 angle is what? 60 degree. Tan inverse of root 3 is 60 degree. And squaring it gives double the angle. Sorry, 60 no, 120 degree. Minus 1 plus j root 3 is this point, na? So this angle is 120 degree here. So minus 1 is root 3. So and sigma. So minus 120 degree square means 2 times. So minus 2 angle gets doubled. And minus 1 plus j root 3 plus 4 is 3 plus j root 3. What is the angle? Tan inverse of root 3 by 3. Tan inverse of 1 by root 3. Which is 30 degree. So it will be minus 30 degree equal to minus 180 degree. And we will transpose, bring back these two terms to that side. 180 plus 30, that is minus 180 plus 30 is minus 150 plus 240. So that will be 90 degree. So angle of minus 1 plus alpha plus j root 3 should be equal to 90 degree. It means what? This term should be completely imaginary with a positive imaginary part. This is already positive as we can see. J root 3 is positive plus root 3. So this term, this real part should be equal to 0 as the angle should be 90 degree. Which implies what? Minus 1 plus alpha should be equal to 0. In other words, alpha equal to 1. Pretty simply we have obtained the value of alpha for this point to lie on the root locus, or this value of S to be the closed loop system to have this pole at our pole at minus 1 plus minus root 3. The correct answer as we obtained is alpha equal to 1. Pretty simple. Can be solved using the angle criterion of root locus. I solved the detailed steps and also got the cover explanation. Hope it helps. It's clear. Student doubts or queries, please feel free to ask in the comment section. And that's all for the solution to this single question. Thank you. Welcome to GATE 2024 EC Solutions. In this video, I am going to discuss the solution of question number 53 from control systems that came in GATE 2024 EC paper. It is based on state space analysis. So let's start the discussion. Question is as follows. Question number 53 in GATE 2024 EC question paper. I went to master question paper is question number 53. System S is represented in state space as
dxt dt equal to 0 minus 2 1 minus 3 x plus 1 0 4 1 0 r, and y is given as 2 minus 5 x. It's basically given, and question it is asked, which of the following state space representations below has or have the same transfer function is the case. Same transfer function as that of S. This is the system is asked which of the following transfer functions below has or have the same transfer function as that of S. Options given are A dxt dt equal to 0 1 minus 2 minus 3 x plus 0 1 r, and y is given as 1 2 is x. Option B dxt dt is given as 0 1 minus 2 and minus 3 x plus 1 0 r, and y is given as 0 2 x. C dxt dt given as minus 1 0 0 minus 2x plus minus 1 3r, y is given as 1 1x. Option number D dxt dt equal to minus 1 0 0 minus 2x plus 1 1r, and y is given as 1 2x. So basically these are the four options given. इस क्वेश्चन में हमको ये फाइंड आउट करना है कि जैसे सिस्टम है इसका जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन दिया उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और इसमें से कौन सा सिस्टम है जिसका सेम ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इसके जैसे. बेसिकली दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एमएसक्यू टाइप. तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करने से. स्मॉल सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन will be something like, we know in state space the state space equation is given by dxt dt equal to ax plus bu, and y is given as, output equation is given as cx plus du. Now you have to identify the matrices from this equation by comparing this equation with the given equations. So A is this matrix. System matrix is this one. The options these are this one, this one, this and this. B is this, this and this. C is this one, this, and this. And D is 0. Null matrix in this case. So the state space transfer function is given as what? Transfer function is given as T of S equal to C into Si minus A inverse B. For this question there is no shortcut as such. You have to find transfer function to each and every system separately and compare with that of S. तो पहले S के ट्रांसफर फंक्शन को निकालना होगा, so that
फर्स्ट वन टू फाइंड आउट ट्रांसफॉर्मेशन एस सो दैट यू कैन कंपेयर इट विद अदर्स। तो हम दूसरों से कंपेयर कर सकें उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम एस का निकालना होगा। सिस्टम एस का ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है क्योंकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है, मतलब 2 × 2 मैट्रिक्स है, स्ट्रेट मैट्रिक्स सिस्टम मैट्रिक्स, और आसान हो जाएगा थोड़ा सा। सिस्टम एस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा टी ऑफ एस क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा इसमें 2, -5 एस आई माइनस ए इनवर्स को साइड में कर लेते हैं। एस आई माइनस ए मतलब एस 2 -1 s + 3। Basically, you have to multiply this matrix. Si is what? This case s 0 0 s, that is s into 1 0 0 1. So basically, you have to multiply this matrix with this matrix and subtract a from that matrix. This system matrix. तो ऐसा करना है, si को इससे a को इससे सेपरेट करना है इस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स को ये करने से इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने से ये आएगा, ठीक है। उसके इनवर्स लेते हैं। इनवर्स सेकंड वाला मैट्रिक्स के लिए बहुत आसान है, ए बी सी डी अगर होता है इनवर्स इसका सी डी हो जाता है 1/AD - BC टाइम्स D - B - C A, ये हो जाता है। तो ऐसे करके करेंगे तो s × s + 3 का क्या हो जाएगा, तो ये उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा क्या s² + 3s + 2, ठीक है। तो इसको यहाँ ला देंगे डिटरमिनेंट को, और बाकी जो s का टर्म है वो इधर चला जाएगा, s + 3 इधर चला जाएगा, और ये -8 हो जाएगा, ओके। सो इफेक्टिवली इट विल बी s + 3/s² + 3s + 2. Here it will be -2/s² + 3s + 2. Here it will be 1/s² + 3s + 2. And here it will be s/s² + 3s + 2. And here it will be c × s - inverse into b. b is this matrix, तो ये वाला मैट्रिक्स इधर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा क्या 2 टाइम्स s + 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो इसका मतलब 0 वैनिश हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके वैनिश हो जाएगा। बेसिकली ये × 2 ये आ गया, और -5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 × this, so -5 times -5 2s + 20s + 3, okay, and here it will be -5 × 1/s² + 3s + 2. So answer function will be simply 2s + 1 upon s² + 3s + 2, ओके। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम है, सिस्टम इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल ले बहुत आसानी से। अब हम एक ऑप्शंस का बिल्कुल देखना पड़ेगा, वो करके देख सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, कुछ कर नहीं सकते, कुछ और शॉर्टकट है नहीं, करके देखना पड़ेगा। तो सिस्टम क्वेश्चन ए के साथ, अगर ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़े तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे, मतलब शॉर्टकट के साथ, ठीक है। ऑप्शन ए के लिए टीएस क्या हो जाएगा, सेम सी एस सी जैसे इनवर्स भी, तो ऐसे जैसे हम लोग सिस्टम एस के लिए किया तो जैसे वैसे ये सिस्टम के लिए करते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। उसके लिए करने से क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, 1 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा s + 3 ऊपर आ जाएगा, सेम होगा क्योंकि इधर रूट सेम है, डिटरमिनेंट सेम बनेगा s + 3 और s + 3 s + 3 और -1 और 2, तो ये सिंपली हो जाएगा क्या सेम हो जाएगा s + 3/s² + 3s + 2
2, यहाँ हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, यहाँ हो जाएगा -2 बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा s बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। बेसिकली कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले एस आई माइनस ए निकालना है, एस ये माइनस ए करके मैट्रिक्स आएगा, उसका इन्वर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, उससे ये आ जाएगा टाइम्स सी इंटू एस आई माइनस ए इन्वर्स इंटू बी। बी इसमें क्या है 0 1 0 1, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म इसी में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू दिस, सॉरी 1 इंटू दिस, सो 1 हो जाएगा, और 2 इंटू दिस, 2s, 1 इंटू दिस टर्म, 1 इंटू दिस टर्म, तो 1, और 2 इंटू दिस टर्म, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 2 के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म, तो 2s, 1 प्लस 2s बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। बेसिकली ये मैच कर लिया। ओके, ये ऑप्शन ए का होगा। ऑप्शन बी का देखते हैं आप, बहुत ही आसानी से। टी ऑफ एस क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा इस केस में, ऑप्शन बी के केस में सी हो जाएगा आपका ये 0 2, ठीक है। एस आई माइनस ए इनवर्स, एस आई है माइनस ए, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए एक चीज, इस केस में और इस केस में, इन दोनों केस में ए सेम है, तो एस आई माइनस ए इनवर्स भी सेम होगा, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा इधर, कॉपी कर दीजिए सिंपली, एस प्लस 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, -2 बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, -3 बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करना हो क्या, आसानी से, इसे माइनस इनवर्स बी, बी है 1 0 1 0, तो क्या बचेगा इफेक्टिवली, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो ये वैनिश हो जाएगा, लेकिन इसके साथ फिर ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी वैनिश हो जाएगा। फाइनल क्या बचेगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा, लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये नहीं बचेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस, 2 इंटू पहला वाला टर्म तो वैनिश हो जाएगा, जो आएगा इनको 0 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला टर्म क्या होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई वैनिश हो जाएगा, इसके साथ ये वाला 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बचेगा उसका 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू दिस टर्म टू 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 होगा -4, तो -4 बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, तो क्या ये मैच कर रहा है सिस्टम इसके साथ, नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी पे करते हैं, ऑप्शन ए और बी का ए मैट्रिक्स सेम होगा, एस आई माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स सेम होगा, ऑप्शन बी सी और डी का सिमिलरली ए मैट्रिक्स सेम है, तो इसका एस आई माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स सेम होगा, तो हम लोग चलिए एस आई माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स में निकाल लेते हैं इसका, सी इंटू एस आई, सी इसमें क्या है 1 1, ठीक है, 1 1, बेसिकली यही है, ये वाला मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स हो गया, एस आई माइनस ए क्या हो जाएगा, देखिए एस मैट्रिक्स एस आई माइनस ए करेंगे तो एस प्लस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, एस प्लस 2 हो जाएगा, उसके इन्वर्स लेंगे, क्योंकि ये इस केस में क्या होगा, सी और डी के केस में क्या हो जाएगा, एस आई माइनस ए इन्वर्स, एस आई माइनस ए क्या हो जाएगा, एस प्लस 1 0 0 एस प्लस 2, ठीक है। इसका इन्वर्स लेंगे क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसका हो जाता है, इसका हो जाएगा क्या, इसका इन्वर्स, बस ये सब जो एलिमेंट्स उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स when the inverse is taken, the resulting elements are the reciprocal of the original elements, it will be something like 1 by s plus 1 0 0 1 by s plus 2, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by s plus 1 0 0
1 by s plus 2। b क्या था इस केस में, c इंटू s i माइनस a, c इंटू s i माइनस a इनवर्स इंटू b, तो b हो जाएगा -3 और 1, -1 और 3 सॉरी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा 1 इंटू दिस, ये तो वैनिश हो जाएगा, तो 1 इंटू दिस प्लस क्या हो जाएगा, इसके साथ ये अगर तो वैनिश होगा 0 है, इसके साथ ये होगा, बेसिकली हो जाएगा 1 इंटू दिस -1 बाई s प्लस 1, और ये वाला 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसके साथ 1 इंटू 3, तो 3 प्लस 3 बाई बेसिकली s प्लस 2। होप इट्स क्लियर, दिखाई दे रहा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, ऐड करना है बस, ठीक से, मतलब साइन के साथ, -1 में s प्लस 1 प्लस 3 बाई s प्लस 2, प्लस है माइनस, तो एलसीएम ले लेते हैं, यही हो जाएगा एलसीएम, s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ठीक है। क्या हो जाएगा -s प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स s प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट कर देंगे तो 3s माइनस s 2s और 3 माइनस, सॉरी माइनस होगा, माइनस बाहर होगा, हाँ तो माइनस 3s माइनस s तो 2s और 3 माइनस 2 तो प्लस 1, तो हो जाएगा बेसिकली 2s प्लस 1 बाई s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो क्या हो गया, फिर से मैच करके ऑप्शन जो s का ट्रांसफॉर्मेशन है सिस्टम s का, तो हम निकाल लेते हैं उसके साथ मैचिंग, सो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे जो करते हैं, इसमें हम लोग पहले से निकाल लिए हैं ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा c इंटू सी, क्या हो जाएगा इस केस में 1 2, ये वाला ऐसे में से इनवर्स, ये हो जाएगा 1 बाई s प्लस 1 0 0 1 बाई s प्लस 2, ठीक है। और b क्या हो जाएगा, b 1 1 करके देख सकते हैं आप, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये वैनिश हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई वैनिश होगा, तो 1 के साथ 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 बाई s प्लस 1 1 बाई s प्लस 1 हो जाएगा इधर, और ये वाला टर्म तो 2 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 बाई s प्लस 2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, मतलब सी लिखते हैं, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 हो जाएगा, इसको लिखेंगे s प्लस 2 प्लस 2 इंटू s प्लस 1, s प्लस 2 प्लस 2 इंटू s प्लस 1 कितना होता है 3s प्लस 4, बेसिकली ये हो गया 3s प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। तो ये भी मैच हम लोग देख सकते हैं, ये मैच नहीं कर रहे, दिस इज नॉट मैचिंग विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम इज दिस 2s प्लस 1 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, दिस इज 3 transformation for system given in option D is 3s plus 4 by s square plus 3s plus 2. So you can clearly see that it is not matching. So the transformation of the system S is 2s plus 1 by 3s square plus 3s plus 2. This is matching the transformations of systems A and C. But the system of transformation B is transformation minus 4 by s square plus 3s plus 2, and system of given option D transformation is 3s plus 4 by s square plus 3s plus 2. So we can clearly see that systems in given options A and C have the same transformation as the system given in the question, which is S, but the systems given in B and D don't have the same transformation. The correct answer
for this question is question for this right answers for this question are options A and C. As it is an MSQ question, two options are correct. So marking them will give you full marks. And if you mark any one of them partially correct, like either A or C, then you will not get any marks. तो पूरा सही फुल मार्क्स लाने के लिए इस क्वेश्चन में ए और सी करेक्ट आंसर्स है, उसको मार्क करना था. So I hope you have understood the solution, detailed solution to this question, and it clarifies all your doubts as each and every step has been discussed in detail. But still, if you have any doubts or queries, feel free to ask me in the comments. I will try to resolve your doubts. That's all for the solution.